Evening, everyone. Let's start with our class. Today, we are going to discuss aphorism number 67. What we have done so far? We have done so far up to aphorism 66. We started with the concept of therapeutic law, which should be the therapeutic law. This started right from aphorism 22, and it came up to aphorism 66. It is a one very big chunk of aphorisms of doctrinal part from which we are learning about the therapeutic law. We got extensive detailed explanations by Master Hahnemann in respect of therapeutic law, which law should be followed. What is there in the nature? What do you see in the nature? What kind of law for the purpose of therapeutics and for the other purposes are seen in the nature? There also we saw the law of similia in the nature, which actually predominates. And always rule out, always shadows the weaker similar affections. This is what we learn from the nature. Then in the natural diseases, interaction of natural diseases, there also what we learned, the stronger natural disease, if it is similar in nature, it will do only one thing, that similar weaker illness will be expelled and the stronger one will prevail. Also, in these aphorisms from 22 to 66, we learnt the therapeutic modalities utilized by the human beings since antiquity, since the ages. Since the ages have been told, though there are only two laws, similia and contraria, only these two laws, they are workable. But then in human understanding, Henman observed four therapeutic methods were in vogue, four therapeutic methods were in use. They are allopathy, isopathy, antipathy, and homeopathy. And Henman has given all the possible details about them to make us understand which is useful. And in the last class, we discussed about various examples and the usefulness of homeopathic way of treatment and uselessness of antipathic way of treatment. And earlier two, isopathy and allopathy, had been already discarded. Now, in this aphorism 67, which is having a very, very important footnote along with it, we all need to really understand this very aphorism from the core. This aphorism 67 is nothing but the summary of all the aphorisms as I described you, 22 to 66. And in the footnote, it has got a very, very strong message
to all of us expresses also the very, very unprejudiced nature, unprejudiced observer in Henman. Let us start with the aphorism 67. It goes like this: these incontrovertible truths, mind it, 22 to 66. We came across many truths. And what is the quality of these truths? That they are having no such contradictions. Incontrovertible. They cannot be converted. These truths cannot be converted from truth to false. Incontrovertible truths, which we learnt 22 to 66, which spontaneously offer themselves to our notice. Such truths, they spontaneously come out to our notice. It is like if you're blowing the curd a lot, the butter comes out spontaneously to our notice. Similarly, in these discussions from aphorism 22 to 66, so many truths which cannot be converted, they just came across spontaneously, came across itself to our notice. Where in two places? In the nature, two things. Just if you observe physics and if you observe the natural diseases interaction, this is in the notice in the nature. One nature is Hahnemann shown in aphorism 26 footnote, where he's talking about the Jupiter and the light and all those things. And the other nature he is talking in aphorism 33, 34 onwards. What happens when two dissimilar diseases meet together? What happens with when two similar diseases meet together? That is nothing but interaction of natural diseases. So many of such truths spontaneously come to our notice in the nature at two places and in the experience, that is when human being as a physician utilized and used the medicines in four ways, four modalities, that is therapeutic modalities: isopathy, homeopathy, allopathy, and antipathy. Out of these experiences and observation in the nature, we come to know the truths which are very spontaneous and which cannot be converted in any way, not really possible to convert them in any way. Going further, explain to us the beneficial action that take place under homeopathic treatment. So from 22 to 66, we come to know the beneficial action of homeopathic treatment, that this way of treatment gives rapid, uh, quick, and permanent restoration of the health. It is not showing any kind of secondary counteraction. While is on the other hand, these aphorisms, they are giving us one way this truth, and on the other hand, they demonstrate the perversity of the antipathic and palliative treatment of diseases with antagonistically acting medicines. Hahnemann in this aphorism 67 only talks about two therapeutic modalities, two therapeutic laws that he started in aphorism 22. If
You can remember Aphorism 22 that there are two ways of treatment, similia and contraria. And in the 67, he is back talking about only two, that we are getting the beneficial effect of the homeopathic treatment and we are getting the harmful effects of the antipathic way of treatment. And he did not talk about anything on isopathy and allopathy because that is he did not consider to talk about. So ultimately, we just read it together. These incontrovertible truths. Why he is using truths? Because two truths are there, two facts are there. One is regarding the benefit of homeopathic treatment, and the second is uselessness of antipathic way of treatment. These incontrovertible truths, which spontaneously offer themselves to our notice in nature and experience, explain to us the beneficial action that take place under homeopathic treatment, while on the other hand, they demonstrate the perversity of antipathic and palliative treatment of diseases with antagonistically acting medicines. He showed he is using a word perversity, means perversion. Why he is using so? Because initially it is perversion means something which is unnatural. Initially showing benefit, but later on severe aggravation, severe harm, much more harm than benefit. So such kind of perversity he is talking about of antipathy, where what we do, we use palliative way of treatment. He made it very clear. I am talking about the two laws. He started in Aphorism 2. What does he say in the Aphorism 2? In the Aphorism 2, he says, comprehensible principles. And in Aphorism 22, he talks about similar or opposite medicinal symptoms. These are the two laws he talked about. And here, then coming back to 67, he says these are the two: beneficial is homeopathic way, harmful is antipathic way. Concluded, what law you and me have to follow if we really want to benefit the suffering sign humanity? Very simple. But there is a footnote here. What is this footnote really telling us? Footnote is very important of this Aphorism 67. This footnote, you can say, have got 3 paragraphs. In the 5th edition, there were only 2 paragraphs in this footnote. But then if you add the another paragraph added by Hahnemann in the 6th edition, they become 3 paragraphs. When it is 3 paragraphs, these each one of the paragraph is conveying something very important to us as a student of homeopathy, as a researcher of homeopathy, as a clinician of homeopathy. The very first paragraph is talking about that what specific utility, what is the specific utility, usefulness, beneficialness of antipathy. He says antipathy is not something to be completely discarded like isopathy and allopathy. It can be used as a tool, but in a given situation, specific to those very important situations. It's very specific. No controversies. That's the
one thing he's talking about. In the second paragraph, which came in the sixth edition, he's talking that because of my first paragraph, where I'm trying to make you understand the very specific usage of antipathy, some are trying to manipulate. Such homeopathic doctors cannot be claimed as homeopathic doctors. And in the third paragraph, last paragraph of it is, he's talking something about the prescribing. And very, very important point regarding the prescribing, he's giving us a very, very important clinical clue, which is sometimes overlooked, left in the classrooms when we are teaching. And as a student, we also forget them because no such question is asked on it. So let us take one by one each of the paragraph and understand about it. So the first paragraph of the footnote of Aphorism 67 says, only in the most urgent cases. Don't miss even a single word. It is not urgent cases. It is not more urgent cases. It is actually most urgent cases. And he became suddenly specific. Now, in the further sentence, Henman is going to be rather more and more very, very specific. He is going to be precise where to use antipathy. Very precisely, he has said here, and no such scope of manipulations. Only in the most urgent cases, where danger to life and imminent death allow no time for the action of homeopathic remedy. So just see how specific he has become. Such most urgent cases where the danger is to the life. What kind of danger? Which is a imminent danger. What do you mean by imminent? When you say imminent, it means that danger is just about to come. The death is just about to come. And just about to come means in a moment, in a half an hour, or maybe in some fraction of an hour, wherein sometime it is really not possible to have the action of the homeopathic medicine. One is the time crunch. Danger is such where the time modality is very, very one. Then in this time modality, he is just giving certain examples before us. Allow no time for the action of homeopathic remedy. That means he's giving a m dash, not hours, sometimes not even quarter hours and scarcely minutes, in sudden accidents occurring to previously healthy individuals. Mind it. Healthy individuals suddenly met with a certain kind of accident. And he's giving you example. Asphyxia. You understand asphyxia? Suddenly something went into the windpipe. It very commonly occurs when you choke your windpipe. While eating, you're talking and you're eating. And sometimes you just choke your windpipe. And sudden and suspended animation from lightning, from suffocation, freezing, drowning, and he uses a word, etc. And you
etc. means add such examples here. What conditions? So, a previously healthy individual suddenly met with such kind of accidents where the death is imminent, such a most urgent danger, where as such no time. Just think if something is choked my windpipe, what do you think? What medicine? You will think endemtat. You will think laurocerasus. What? So these are the areas we need to talk. As per aphorism 7 footnote Hahnemann says, every intelligent physician is not necessary to tell what all he has to remove as a block, as a obstruction. Such conditions are in fact not really the disease, rather they are the obstructions in the exact flow, dynamic flow of the life. So how does homeopathy come here? Does not come here. Going further in this paragraph, is it admissible and judicious? It is allowed, it is to be admitted, and it is lawful, it is judicious. At all events, as a preliminary measure, how such antipathic way of measure will be a preliminary measure. What this kind of measure will do? To stimulate the irritability and sensibility in the bracket the physical life with a palliative, as for instance with gentle electrical shocks. See, we give this, any sudden cardiac arrest occurs, we give that electric shock to the heart to revive the person. With clusters of strong coffee, with a stimulating odor, gradual application of heat, etc., and all other such measures. When this stimulation is effected, the play of the vital organs again goes on in its former healthy manner, for there is here no disease to be removed, but merely an obstruction and suppression of the healthy vital force. So, very clearly it is mentioned that whatever such first aid methods are to be utilized are to be utilized in the conditions where person is almost healthy previously, met with an accident, and now at this moment, any minute death will come. It is imminent. It has not come, but it is about to come. This is the meaning of imminent. In such conditions, Henman says to revive the vitality. It is the time to utilize antipathy, and it is the time which is exactly no to homeopathy. If you refer the author's introduction, para 9, in author's introduction, para 9, Henman is talking to understand about the disease. What is disease? So just read it for you. Para 9, a few lines. The nature of the spiritual corporeal organism, as such, a highly potentized entity that its sensational and functional vital changes, which are called diseases, must be produced and effected chiefly, if not solely, by dynamic spiritual influences and could not be effected in any other way. So, what is this spiritual corporeal organism? This unity, because of some accident,
When this unity comes at stake, when this unity is in danger because of the some accident, sudden accident, that is the time for the use of antipathy. It is not that any emergency you utilize this. Now, this is the second paragraph. Can you see this asterisk here? At this asterisk, Henman is adding another paragraph and says, don't misunderstand me. When I'm saying the most urgent cases does not mean you misunderstand my words, and in any of the little emergencies you utilize, you start using the allopathic, antipathic or other modes of treatment which are harmful. And I will be saying, and says I will be saying that it is not to be called as homeopathic doctor. This is the second paragraph, which is in the fifth, sixth edition, given at the bottom. I am reading that first. And yet, the new sect that mixes the two systems appeals to this observation in order that they may have an excuse for encountering everywhere such exceptions to the general rule in diseases as to justify their convenient employment of allopathic palliatives and of other injurious allopathic trash besides, solely for the sake of sparing themselves the trouble of seeking for the suitable homeopathic remedy for each case of disease, and thus conveniently appear as homeopathic physicians without being such. I might almost say, for the sake of sparing themselves the trouble of being homeopathic physicians and yet wishing to appear as such, but their performances are on a par with the system they pursue. They are nothing to boast of. They are corrupting, he says in the sixth edition. So Hahnemann is really dismissing such people, such optic physicians, which are utilizing, misutilizing Hahnemann's words in the first paragraph of Aphorism 67 footnote. And he says, please don't call yourself as homeopathic doctor if you're doing so. So try to understand the situation. A one person who is otherwise healthy in a meeting, in a party, suddenly chokes his windpipe. It is a situation, it is a happening, it is an accident. Cannot be called as disease. And sometimes it becomes so severe and harmful, the exact asphyxia takes place. He may get unconscious and everything. And in such conditions, all measures of antipathy are to be utilized. Purpose to revitate him, to really give him back his vitality, because the organism is nothing but a unity of vital force and the physical body. So when at any moment, because of any accident, it comes at stake, this unity comes in the danger. The time to utilize antipathy just to revitate, nothing else. And there again, the comes. Homeopathy has got no scope. There is a limitation of homeopathy. But then mind it, exactly, most urgent cases, death is just on the head, and previously the person was almost healthy. And a accidental situation took place. That's it. Don't ask anything else, about all these things. Then comes the last paragraph. Now it is altogether a different paragraph. In this paragraph, Henneman is talking. Now imagine when we talk law of similia. Law of similia means it is not same, it is similar. Means in a given case,
In one of the case, you have selected a medicine bryonia, but if you very critically examine and match, compare symptoms of the patient with the symptoms of the bryonia proving, you may find some 2 3 symptoms which are almost opposite to the symptoms of the bryonia. Like for example, somebody is having pain at different 4 locations: head, joints, abdomen, back. And in these 2 locations, say for example, 2 joints are such where pains are better by motion, but rest of the joints and every pain is better by absolute rest. Now, we should understand what is this here at this moment for these 2 symptoms, where aggravation from absolute is there and amelioration by motion is there, and Grainia is contradictory in these 2 symptoms. What should be the role of the prescriber? Henman says here in this paragraph, the role of the prescriber is, if rest of the symptoms which you have considered, if they are very dominant, if they are very clear, if they are very striking, then in that case, your choice of bryonia is correct. And in the course of effect of bryonia, you will notice not that those prominent striking symptoms will go away, these contradictory features will also go away by itself. Does not mean that you take it as a kind of contradictory remedy, you cannot prescribe this remedy. Such symptoms in a given case are called accidental symptoms. They are accidental symptoms, should not be given much of the importance, and they just pass off. And it is a very good topic for the purpose of research for the MD and PhD scholars in homeopathy to exactly understand the accidental symptoms, reasons of their occurring, why we should really ignore them, and how then they go away. But this is what Henman's experience, and he's noting down here in this footnote. All right. So this is all about Aphorism 67 and its footnote. Let us just have it again. अभी तक हमने अफोरिज्म 22 से स्टार्ट किया. किस बारे में स्टार्ट किया? हमने थेरेपेटिक लॉ कौन सा होना चाहिए, किस बेसिस पे मुझे मेडिसिन देनी चाहिए, मैं लॉ ऑफ सिमिलिया यूज करूं कि मैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रेरिया यूज करूं. क्योंकि 22 अफोरिज्म से पहले अप टू 21 अफोरिज्म हेनमन ने ये बात ही नहीं की, होम्योपैथी एलोपैथी है वो कुछ भी बात ही नहीं किया. उन्होंने तो बस ये बात किया कि फिजिशियन कैसा होना चाहिए, केस चेकिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फिजिशियन अनप्रेजुडिस्ड ऑब्जर्वर कैसे हो सकता है, और इस तरह की बातें बोली. सिम्टम्स कहाँ से, आप सोर्सेज क्या होंगे, किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ये सब बातें कहीं जो कि लगभग किसी भी स्ट्रीम के डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है. उसमें वो विशेष रूप से सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए है ऐसा नहीं है, वो सभी डॉक्टर्स के लिए है. हमारे लिए तो है ही, बट सबके लिए है. तो 21 तक हेनमन कहीं पे भी होम्योपैथिक डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, सब डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं. 22 से उन्होंने शुरू किया, जहां उन्होंने अफोरिज्म 2 में ये कहा कि कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल पे इलाज होना चाहिए. और यहाँ पहली बार उस बात का जवाब दिया कि मैं किसको कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल समझ पाया हूँ.
जान पाया हूँ। तो उन्होंने बताया लॉ ऑफ सिमिलिया और लॉ ऑफ कंट्रारियन। यहाँ से बात शुरू हुई। 22 से लेके 66 तक, 22 से लेके 66 तक हेनमैन ने हमको ऑपरेट तरीके से, बहुत ही खुले मन से, बहुत ही इलस्ट्रेट करके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, जगह जगह बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस के साथ हमको ये समझाने की कोशिश की है कि थेरेपेटिक लॉ कौन सा होना चाहिए। तो उन्होंने जो था अवेलेबल, छुपा हुआ था, वो भी निकाल के दिखाया। जो बिल्कुल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था वो भी बताया। नेचर में क्या होता है वो बताया। नेचर के अंदर नेचुरल डिजीजेस आपस में कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और उनमें किस तरह के रिजल्ट होते हैं वो बताया। वो सब बताते हुए आखिरी के अंदर यहाँ पर हेनमैन अफोरिज्म 67 पे आ गए। और अफोरिज्म 67 पे आने के बाद यहाँ उन्होंने इस पूरी की पूरी करीबन 44-45 अफोरिज्म को लाके कंक्लूड कर दिया। और कंक्लूड करते वक्त हमें अफोरिज्म 2, 22 और 67 इनका ध्यान रखना चाहिए। इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, लॉ की बात हो रही है, प्रिंसिपल्स की बात हो रही है। और 22 से उन्होंने कहा कि दो की बात कर रहा हूं मैं, सिमिलिया और कॉन्ट्रारिया। नेचर का बताया, नेचर में जो भी डोमिनेंट होगा उस वो अपने सिमिलर वाले को पुश आउट कर देगा। नेचुरल डिजीजेस के अंदर भी देखा, सिमिलर वीकर वाले को सिमिलर स्ट्रॉन्गर वाला भगा देगा। और जब इंसान ने एज ए फिजिशियन सिंस एजेस जिस भी तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल बीमारियों में किया, उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला होम्योपैथी, जो कि दवा छुपाता था, जिसका ग्लिम्स दिखता था। दूसरा आइसोपैथी, उसके जैसा बनाने की कोशिश की गई लेकिन गलतियां हो गई। तीसरा एलोपैथी, जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज हुआ करता था 2500 साल से, और उसके साथ में एक और यूज होता था, वो पता नहीं लगता था उनको हम एलोपैथी कर रहे हैं कि एंटीपैथी कर रहे हैं। बड़ा मिक्स्ड है वो सारा का सारा। समटाइम इसलिए क्वेश्चन भी आप लोग पूछते हैं कि ये एंटीपैथी हुआ कि एलोपैथी हुआ। हेनमैन एलोपैथी की बात कर रहा है कि एंटीपैथी हुआ। हेनमैन अपनी बात में बड़ा साफ है। जब सवाल अदर फिजिशियंस का आता है वो बड़े मिक्स्ड है। हेनमैन ये कहना चाहते हैं वो बड़े मिक्स्ड है, उनमें से हेनमैन ने छांट के बोला है, तो कई बार वहां कंफ्यूजन हो जाता है। तो हेनमैन ने उस 4 थेरेपेटिक मोडेलिटीज जो ह्यूमन बीइंग ने बीमारियों को ठीक करने के नाम पे यूज की, वो ये थी। होम्योपैथी बड़ा दबा छुपा था, पता भी नहीं था कि वो यूज किया जा रहा है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल एलोपैथी था और उसके अंदर ही कहीं ना कहीं एंटीपैथी यूज हो जाता था। उसकी आइसोपैथी का इस्तेमाल करने का तरीका किया। तो यहाँ एलोपैथी और आइसोपैथी को तो हेनमैन ने डिस्कार्ड कर दिया कि ये भाई काम का नहीं है, इससे नुकसान होता है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और बहुत जगह पे उसने इसके बारे में, स्पेशली इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनोन में हेनमैन ने बड़ा एक्सप्लेन किया है एलोपैथी के बारे में, इसलिए उसने ज़्यादा यहाँ बोला नहीं। और फिर उसके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा चर्चा, सबसे ज़्यादा डिस्कशन किया एंटीपैथी और एंटीपैथी को लेकर के मेनली, और होम्योपैथी को साथ में उसके दिखाते बताते हुए। और करते कराते आखिरी में उन्होंने कंक्लूड 67 में किया। क्या कह रहे हैं 67 में? कि दो ऐसे सच हैं, इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल्स, अफोरिज्म 2, लॉ ऑफ सिमिलिया एंड कंट्रारिया, अफोरिज्म 22, और दो सच, अफोरिज्म 67। पहला सच, सच जो बदला ही नहीं जा सकता, इनकंट्रोवर्टिबल। पहला सच कि ये दो लॉ में होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट ही यूजफुल है। अब दूसरा सच कि एंटीपैथिक ट्रीटमेंट एकदम नुकसान करने वाला है। यहां आकर के उसने बात कंक्लूड कर दी 67। और फिर यहाँ पे एक फुटनोट लगाया, जिस फुटनोट में हेनमैन ने 3 पैराग्राफ लिखे, जिसके अंदर एक पैराग्राफ उन्होंने 6th एडिशन में ऐड किया था। पहले तीनों पैराग्राफ में अलग अलग बातें कही हुई, मिलती जुलती। पहले पैराग्राफ में क्या है? पहले पैराग्राफ में वो ये कह रहे हैं
कि ऐसी कंडीशंस जहां पर लाइफ बस अब खत्म होने वाली है, डेथ होने वाली, बस हो गई, और उससे कुछ समय पहले पर्सन लगभग हेल्दी था, कुछ बीमारी की बात भी नहीं थी, और कुछ भी समय अवेलेबल नहीं है कि आप कोई एकोनाइट ढूंढोगे कि एंटीमटाट ढूंढोगे कुछ करने के लिए। तो उन्होंने सिचुएशन, एक हेल्दी आदमी, एक्सीडेंट हुआ, डेथ खड़ी हो गई एकदम सर पे आके, आई नहीं है, बस खड़ी हो गई सर पे आके, और आपके समय नहीं है, बहुत मिनिमम समय है। ऐसे में होता क्या है इस मोस्ट डेंजरस सिचुएशन में, कि जो पैराग्राफ 9 जो इंट्रोडक्शन टू द ऑर्गेनोन हेलमैन ने लिखा, वहां पे वो लिखते हैं कि स्पिरिचुअल कॉर्पोरियल कॉम्बिनेशन है ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब इसका, कि जहां पर वाइटैलिटी एंड फिजिकल बॉडी एक यूनिटी बनती है, उस यूनिटी पे डेंजर आ जाता है। वो यूनिटी का डिवाइड हो जाना डेथ होता है। उस पे डेंजर आ गया, उस यूनिटी पे एक मुसीबत आ गई। वो एक सिचुएशन है, वो बीमारी है ही नहीं। और उस सिचुएशन में जब एक पर्सन ऐसा डेंजर में आ जाता है, उस समय पे सिर्फ एंटीपैथी का ही रोल होता है और उसका ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बट माइंड इट कि ये एग्जैक्ट हैनमिन ने प्रिसाइज कंडीशंस लिखी हैं। हम हर डेंजर को ये मान लें कि अरे बड़ा सीवियर पेट में दर्द हो रहा है, इसको कुछ हो जाएगा, जल्दी से एंटीपैथी कर दो, ये हैनमिन ने नहीं कहा। जहां इमिनेंट डेथ की बात आ रही है वहां पर हम एंटीपैथी करें, और उसका सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम उस वाइटैलिटी और फिजिकल बॉडी का जो टूटने का खतरा है, उस खतरे को टाल दें। जैसे ही वो टला, ये यूनिटी बरकरार रही, एंटीपैथी का स्कोप खत्म, होम्योपैथी का स्कोप चालू। दूसरे पैराग्राफ में क्या कहते हैं, वो जो 6th एडिशन में जोड़ा उन्होंने यही एस्टेरिक लगा के दिखा रहे हैं कि कुछ लोग मेरे इस बात को, मेरे इस यूजफुलनेस ऑफ एंटीपैथी को, एंटीपैथी के फायदे को, एंटीपैथी के स्कोप को, एंटीपैथी के इस्तेमाल की संभावनाओं को जब मैंने यहाँ पे कहा है, तो कुछ लोग इसका गलत मतलब निकाल के और ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, लेकिन कभी कभी जब ऐसे सिचुएशन आती है तो मैं एलोपैथी कर लेता हूँ। तो हनमैन कहते हैं कि ये सब अलाउड नहीं है, एक्सेप्ट दोज वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस। ऐसे हालात जहाँ बस अभी मृत्यु होने वाली है, वहीं पे ही इस्तेमाल अलाउड है, नहीं तो आप अपने को होम्योपैथिक डॉक्टर मत कहो। और तीसरे पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो एक्सीडेंटल सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। एक्सीडेंटल सिम्टम्स किसको कहते हैं? ऐसे सिम्टम्स जो टोटलिटी हमको एक केस में रिवील हुई, उस दवा से कॉन्ट्राडिक्टरी वो सिम्टम्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक केस में हमने ब्राइनिया का सिलेक्शन किया। क्या था बेसिस? कि उसको जॉइंट पेन्स थे, उसको कमर में दर्द था, जोड़ों में दर्द था, पेट में दर्द था, सिर में दर्द था, सब जगह उसको एब्सोल्यूट रेस्ट से ही एमेलियोरेशन था, और एनी मोशन से भी एग्रावेशन था। बट दो उसके ऐसे जॉइंट थे जिन जॉइंट में उसका पेन मोशन से एमेलियोरेशन होता था और एब्सोल्यूट रेस्ट से बढ़ता था। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर हो गया ब्राइनिया के साथ में। ऐसे सर्कमस्टांसेस में क्या हमारा ब्राइनिया का सिलेक्शन रॉन्ग हो गया? हेनमैन कहते हैं नहीं। जब आपने बड़े प्रोमिनेंट, स्ट्राइकिंग, बड़े ही मुख्य सिम्टम्स के आधार पे अपनी दवा का चुनाव किया था ब्राइनिया, तो ये ब्राइनिया सही है। ये दो सिम्टम जो उससे उल्टे दिख रहे हैं, जो एक तरह से एंटीपैथिक दिख रहे हैं ब्राइनिया से, इनको इग्नोर किया जाना चाहिए, और इसको हम एक एक्सीडेंटल सिम्टम की तरह से भी नाम दे सकते हैं।
इन सिम्टम्स का हमको बाद में जब पेशेंट ठीक होता है तो पता लगता है कि ये सिम्टम भी चले गए। रिसर्च का विषय है, एक रिसर्च का टॉपिक हो सकता है अग्नोन के और मिट्रेमेडिका के लोग। इस तरह का एक्सीडेंटल सिम्टम क्यों होता है? एक्सीडेंटल सिम्टम इसलिए हो सकता है, पहली बात कि दवा तो सिमिलिया के आधार पे है ना, उसके जैसा है, एग्जैक्ट सेम के आधार पे तो है नहीं, तो डेफिनेटली कुछ और सिम्टम तो होने ही है निश्चित रूप से। बट जब इस तरह का कोई बिल्कुल ही एंटीपैथिक यूसेज दिखने लगता है प्राइमिया का ऐसे सर्कमस्टांसेस में, तो इस तरह के सिम्टम्स को एक ही तरीका है मैंने बताया कि इग्नोर करो और वो चले जाते हैं। बाकी ये रिसर्च का विषय है कि आए क्यों गए क्यों। सिलेक्शन के मामले में आपको डाउट नहीं करना चाहिए, ये सबसे बड़ा, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके की बातों को अगर हम अपनी समझ में रख के चलेंगे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, और जिस तरह का ये एक पैराग्राफ है इस फुटनोट का, ये जनरली मैं समझता हूँ कि क्लासरूम्स में और बहुत सारी जगहों में इग्नोर हो जाता है और हम इसका अपने क्लिनिक में बहुत अच्छा समझ के इस्तेमाल नहीं कर पाते। और कई बार फिर हम जब विषय चुन रहे होते हैं किस पे रिसर्च करें तो वो भी हमारे को नहीं समझ में आता। तो ये बहुत ही अच्छा विषय भी हो सकता है, किसी तरह का रिसर्च करने का कोई प्रोग्राम बनाता है कोई आदमी अपने एमडी और पीजीटी के लिहाज से। तो हमने आज ये बात को समझने की कोशिश की कुल मिला के कि अफोरिज्म 67 अल्टीमेटली ये कंक्लूड कर देता है कि दो लॉ हैं, दो में से एक, दोनों ही यूजफुल है, एक रेगुलरली इस्तेमाल होना चाहिए, एंटीपैथी का इस्तेमाल इन वेरी स्पेशल सिचुएशन, जबकि वैसे हालात हों तब ही इस्तेमाल होना चाहिए। कोई दूसरा तरीका दोनों को इधर उधर मिला जुला के किया जाता है, ये तो हैनमन ने कहा है कि रॉन्ग है, ये नहीं किया जा सकता। तो आई मीन कंडीशंस का ध्यान रखें, मोस्ट अर्जेंट केसेस, ये ध्यान रखते हुए अगर हम अपने क्लिनिक में काम करेंगे तो हम बहुत ध्यान रख के बहुत सारी तरह की अननेसेसरी विदाउट एनी रिक्वायरमेंट एंटीपैथी के इस्तेमाल को हम बचा सकेंगे। मुझे लगता है कि आपको अफोरिज्म 67 और उसका फुटनोट क्लिनिकली और एकेडमिकली और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों तरीके से ये समझ में आया होगा। एंड आई एम श्योर आपको इससे बहुत बहुत फायदा होगा अपने क्लिनिक के लिहाज से भी, आगे चिंतन करने के लिए भी। आपके कोई सवाल हो आप मुझे भी लिखें, हमें उसको हम अभी भी डिस्कस कर सकते हैं। आपके सवाल आपको लगता है कि आप बाद में पूछेंगे तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में और कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो आज हम यहीं विराम करते हैं और इस समय हमारे लाइव चैट में अगर कोई कमेंट्स है तो उनको देख लेते हैं। लाइव चैट में कोई हमारे पास से विशेष कमेंट्स नहीं है, तो आई होप आपको ये बड़ा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमको ये सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। Yes, Umesh, what is your question? Aphorism 76, you read it. What does it say? क्या कहता है Aphorism 76? अच्छा है, अपने 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 क्वेश्चन पे हमको सबको स्टिक करना चाहिए। मैं बहुत सारी जगह पे रिजर्व हो जाता हूँ, उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मैं समझता हूँ कि एक सही जगह पे वो बात ही आ जाएगी ऑग्नोन की, तो आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल पाएगा। तो हाँ, like Dr. Shab, you're right that in cases of corona, we are doing all this. It should not be done. It is harmful. It should not be done. Electric system is over. No battery. Except the conditions where you need oxygen, you need fluid, and all such. There, yes, we have to use oxygen, everything. But does not mean that you, in the name of medicine, you are giving antiviral, you are giving
all steroidal treatment, you are giving homeopathy along with that, it is not of much use, rather detrimental to the patient. So anyway, I think it's time we will be continuing our discussion. Umesh, you write in the group, it will be better to discuss it with everyone. Thank you very much for today. Relax.